Lesson plan for A Tale of Two Birds. Date, subject, English, period, first, class 6, sub-subject English supplementary, duration 36 minutes, topic A Tale of Two Birds. Journal objectives हैं to create interest in English language of the students, next to enable them to express ideas of the passage orally and in writing, to enable the students to enjoy reading and writing, to enable the student to learn new English words and their meaning, to enable them to get knowledge of the lesson. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा सबसे पहले नॉलेज. इसमें आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द लेसन अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द बेसिक नॉलेज अबाउट द लेसन. अंडरस्टैंडिंग में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. एप्लीकेशन में आएगा टू इंक्रीज द लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज दिस नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लासरूम. नेक्स्ट इज़ टीचिंग एड्स. इसमें आप ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर या चार्ट और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द लेसन. नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. इसमें प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी. तो where do the birds live in the nest? Name some birds. Peacock, crow. What can birds do but human beings can't? Birds can fly. Where do rishi live? In the ashram. Announcement of the topic. We are going to discuss A Tale of Two Birds. Presentation हम इस तरीके से करेंगे. Teaching point, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी. इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले. प्यूपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट. स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली. प्यूपल टीचर विल राइट द हेडिंग अ टेल ऑफ टू बर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड इंट्रोड्यूस द स्टोरी. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन. प्यूपल टीचर विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग पैराग्राफ. स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. इस तरीके से हम करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ को हमने इस पार्ट में डिवाइड किया. सेकंड पैराग्राफ को ऐसे. द किंग केप्ट से लेके थर्ड पैराग्राफ हो गया. सून ही से लेके फोर्थ, और नेक्स्ट है द ऋषि ग्रीटेड. पैराग्राफ वाइज हमने डिस्क्राइब करना है. उसके बाद टीचिंग मेथड, ये पॉइंट्स भी लिखने हैं. टीचिंग एड्स और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, ये भी साथ में लिखे जाते हैं. टीचिंग मेथड में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड. टीचिंग एड्स में चार्ट, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, बुक, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा. ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप टॉपिक लिख देंगे और ये वर्ड मीनिंग लिख देंगे साथ में. अमेज्ड, कंफर्टेबल, कंपनी, रॉबर्स, फॉर्चुनेटली, हंट एंड इमिटेट. नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग पॉइंट. पीपल टीचर एक्टिविटी में moral of the story. Pupil teacher will explain the moral of the story. Student will listen and understand the moral of the story. One should make friends with the people who are good in nature. If we take the company of bad people, we will also become bad. Next आ जाएंगे comprehensive questions. How did the two birds get separated? Where did each of them find a home?